Hello and welcome to the explosive weekend debate with me, Ayushman Singh Jambal. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath had an exclusive conversation with News 18 Group Editor-in-Chief Rahul Joshi, where he spoke about the BJP's aim for the 2024 Lok Sabha polls in Uttar Pradesh and attacked the Congress party over the Bharat Jodo Yatra. He even slammed the Samajwadi Party for being ungrateful after former SP stalwart Mulayam Singh Yadav was awarded the Padma Vibhushan. Listen in to this exclusive conversation. आपने तमाम चुनाव की बात की तो 2014 में 71 सीट लेकर बीजेपी यहां आई थी, 2019 में 63 सीट, 2024 में आप कितनी सीट देखते हैं? देखिए, 2024 में भारतीय जनता पार्टी 2019 से ज्यादा सीटें यहां पाएगी और बेहतर परिणाम देगी। 2014 की 71 सीट का रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? मैंने कहा ना, बेहतर परिणाम हम यूपी से देंगे। तो ये कैसे आपको लगता है? मान लीजिए कि सारी पार्टियां साथ एकजुट हो जाएं और एक ही कैंडिडेट आपके खिलाफ खड़ा करें तो क्या होगा? ये 19 में हो चुका है, ऐसा है नहीं कि कोई नया हो रहा है। 19 में सब हो चुका है, ये सारा प्रयोग हो चुके हैं यूपी में। एक कास्ट सेंसस की डिमांड आई है जो कि काफी प्रदेश देख भी रहे हैं, बिहार में काम शुरू भी हो गया है। यहां पे उत्तर प्रदेश में अभी तक कुछ इस पर वो नहीं हुई, आप इसको कैसे देखते हैं? क्या करेंगे? ये सेंसस की कार्रवाई राज्य सरकार नहीं कराती, भारत जनगणना आयोग कराता है और जो भी उनकी अपनी गाइडलाइन होगी, जो भी उनके कार्यक्रम होंगे, राज्य सरकार उसके अनुसार चलेगी और राज्य सरकार उसी आधार पर अपने कार्यक्रम का। पर क्या आप उसके सपोर्ट में हैं? मैंने कहा ना, जो भी भारत सरकार तय करेगी और जनगणना आयोग तय करेगा, हम उसके साथ में हैं। योगी जी, आप राम जन्मभूमि आंदोलन से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि इस बार मुलायम सिंह यादव जी को, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण दिया गया, कार सेवकों पे 1990 में उन्होंने गोली चलाने के आदेश वगैरह दिए थे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर एक व्यक्ति के जीवन में उसके सकारात्मक पक्ष भी होंगे, कुछ नकारात्मक पक्ष भी होंगे। लोक सेवा में एक लंबे कालखंड तक उनके द्वारा किए गए योगदान के लिए उन्हें पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेकिन ये समाजवादी पार्टी के लिए एक अवसर था कि जब वो प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की डिक्शनरी में कहीं कृतज्ञता शब्द है ही नहीं, धन्यवाद शब्द है ही नहीं। और वो इस प्रकार के सम्मान को पचा भी नहीं पाएंगे। इसलिए नहीं पचा पाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने नेताजी को कभी सम्मान दिया ही नहीं, तो वे लोग तो टिप्पणी करेंगे ही करेंगे। लोग कहते हैं कि इसमें आप लोगों की भी यादव वोट बैंक पर नजर है, इसमें राजनीति का भी एक एंगल। ये वोट बैंक का नजरिया नहीं है, यह किसी एक फील्ड में कार्य करने वाले लोगों की उन कार्यक्रमों को एप्रिसिएट करके नई पीढ़ी को समाज सेवा के कार्यों के साथ जोड़ने के लिए एक नई प्रेरणा है। योगी जी, मैं आपसे इस बारे में भी पिछली बार पहले भी चर्चा कर चुका हूं। मैंने आपसे सवाल किया था कि आपका मुसलमानों से क्या रिश्ता है। मैं उसी सवाल को थोड़ा आगे ले जाना चाहता हूं कि मुसलमानों को आप कैसे जोड़ेंगे अपने साथ। मोदी जी भी आजकल कोशिश कर रहे हैं कि जो है पासमानदा मुसलमानों को जो है अपने साथ जोड़ा जाए। ये भी गरीब वर्ग है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, इसको भी अपने संग जोड़ा जाए। तो आप इनको कैसे जोड़ेंगे? देखिए, किसी को जोड़ने के लिए व्यक्ति, जाति, मत और मजहब नहीं, बल्कि शासन की योजनाओं के माध्यम से उनके साथ सीधे संवाद का कार्यक्रम। और आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं। अगर हिंदुओं के शांतिपूर्ण तरीके से कार्यक्रम हो रहे हैं तो मुसलमानों को भी शांतिपूर्ण तरीके से हो रहे हैं। आज सुरक्षा का एहसास, अगर हिंदू बेटी सुरक्षित है तो मुस्लिम बेटी भी सुरक्षित है। तो हर व्यक्ति को इन चीजों का लाभ मिल रहा है, उनको एहसास हो रहा है कि सुरक्षा और सुशासन का लाभ किस रूप में आगे मिल सकता है। ये चीजें उनको देखने को मिल रही, तो उसका लाभ सबको मिल रहा है और ये जुड़ने का सबसे अच्छा माध्यम। दूसरा, शासन की योजनाएं, कोई भी योजना हो, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ उनको प्राप्त हो रहा है। ये नहीं पिक एंड चूज नहीं कि ये मेरा है तेरा है, ये नहीं हो सकता है। जिस दिन लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना तुष्टीकरण नहीं है,
लोकतंत्र की सबसे पवित्र भावना है कि समभाव से हम शासन की योजनाओं का लाभ सबको दें और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही लोकतंत्र का मूल भाव भी है और यही जोड़ने का एक आधार भी है। आरएसएस के मोहन भागवत जी ने कुछ दिनों पहले कहा था कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को डर के रहने की जरूरत नहीं है, इस्लाम को यहां कोई थ्रेट भी नहीं है, मगर उनको अपना एटीट्यूड थोड़ा बदलना पड़ेगा। हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बनना चाहते हैं, ये छोड़ना पड़ेगा। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ, माननीय सरसंघ चालक जी ने जो बात कही है एकदम सही परिप्रेक्ष्य में कही है। हमें तो भारतीय दृष्टिकोण को अपनाना पड़ेगा। अगर हम भारतीय सब हर नागरिक को जाति, मत और मजहब से ऊपर उठ करके पहले अपने को एक भारतीय नागरिक मानना पड़ेगा, अपने आप को। और भारत का दृष्टिकोण भी यही कहता है कि ये मेरा है, ये पराया है। ये तो छोटी बुद्धि के लोग करते हैं। विराट सोच वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही एक परिवार है। तो सबको एक समग्र दृष्टि से देखने का प्रयास अगर हम करेंगे तो कहीं कोई विवाद ही नहीं होगा। And let's get in our guest to discuss this exclusive interview with Yogi Adityanath and the big pitch he has made ahead of the 2024 election battle. I'm joined by Shaina NC, BJP spokesperson, Kapil Madan, political analyst, PKD Nambiar, political analyst, as well as Professor Bhuvan Joshi, SP spokesperson. Professor Joshi, I'll come to you first. Yogi Adityanath making that pitch that you are no longer the factor when it comes to the election battlefield of Uttar Pradesh. Your reaction to that? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, योगी जी की बातों को, इंटरव्यू को मैंने बहुत ध्यान से अभी आपके चैनल के माध्यम से भी सुना और पहले भी सुना। तो निश्चित तौर पे कहना चाहता हूँ, उनकी कथनी और करनी में अंतर है। और वो कथनी में और करनी में अंतर ये दिखता है कि जब वो पूरा चुनाव को 80-20 की बात कह के जीते और एक भी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को टिकट नहीं देने का काम करे, तो निश्चित तौर पे उनकी बातों में मुझे बेईमानी दिखाई देती। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं, आज के परिप्रेक्ष्य जो माननीय मुलायम सिंह जी को रिवॉर्ड के विषय में जो अभी आपने दिखाया, मैं कहना चाहता हूं, माननीय मुलायम सिंह जी लगातार तीन बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे। इसके साथ साथ वो एक बार रक्षा मंत्री रहे। एक विराट जीवन उनका किसानों के प्रति, पिछड़ों के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति, युवाओं के प्रति और सेना में सैनिकों के लिए जो उन्होंने काम करा, हम लोग आशा कर रहे थे कि सरकार उनको भारत रत्न देगी। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी की इच्छा थी कि उनको भारत रत्न देके सम्मानित करने का काम केंद्र सरकार करेगी। निश्चित तौर पे ये उनकी जो प्रतिष्ठा है, जो उनका जो गरिमामय इतिहास रहा है, उसके अनुरूप ये बहुत छोटी सी उनको विभूषण जो है उनके सामने बोना था। आपका ये पिच है कि टिकट्स वो पिछड़े वर्ग के और मुसलमानों को नहीं देते हैं बीजेपी। आपके हिसाब से इलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है, जीतना या टिकट किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को देना? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, या तो खुल के कहें कि फिर वो बातें क्यों करते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, ये झूठी झूठी स्लोगन क्यों फैलाते हैं? और अगर पार्टी स्वीप मारती है इलेक्शन में, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत का संविधान क्या कहता है? मैं तो कानून का विद्यार्थी हूँ। भारत का संविधान कहता है कि हमारे सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्गों को साथ लेके चलना है, उनको प्रतिनिधित्व देना है। जब प्रतिनिधित्व की बात आती है तो आप मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के लायक नहीं समझते। आपकी 403 विधानसभा में से एक सीट आपने दी, आप बताइए किसी मुस्लिम को टिकट दिया इन्होंने? पर जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है या टिकट किस मजहब को जाए, किस वर्ग को जाए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? मैं कह रहा हूँ, एक तरफा रहिए ना, फिर मत कहिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। ये झूठी झूठी बातें, डबल मीनिंग जो बातें तो आपके हिसाब से जो योगी सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो एक ही वर्ग की तरफ जाते हैं, क्या आपका ये एलिगेशन है? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये साफ भेदभाव सरकार में देखा है। दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 6 साल पूरे होने वाले हैं। ये दिख रहा है कि एक जाति वर्ग के लोगों के साथ और एक धर्म विशेष के साथ इनका किस प्रकार भेदभावपूर्ण रवैया है, किस प्रकार उनपे आज जो घटनाएं घट रही हैं उनपे आप, ये पूरा देश और प्रदेश समझ रहा है इस नीति को। और ये बातें ना करें, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हमारी आपत्ति इसलिए कह ये कह दीजिए कि हमारा फलानी जाति का, फलाने धर्म का हम लोग करेंगे, तो समझ में आता है। फिर सबका जाति, सबका, भाई 403 विधानसभा, एक योग्य पात्र नहीं है आपके पास।
आप क्या समझते हैं उसको, केवल तो वोटों के लिए समझते पर हो? वो जीत रहे हैं सर, पॉइंट तो ये हो गया ना, चुनाव जीतना भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अपना एजेंडा को आगे रखने के लिए। और अगर सबका साथ सबका विकास 2014 से उनका एजेंडा रह चुका है, लोकसभा इलेक्शन स्वीप कर रहे हैं, स्टेट इलेक्शन 2 स्वीप कर दे, आप ये क्या पॉलिटिकल पॉइंट्स दे रहे हैं कि उन्होंने इसको टिकट नहीं दिया, उसको टिकट नहीं दिया? शाइना एनसी प्लीज। मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, जो भारत का अभी जो आपने संविधान, इनको समय दिया है, मुझे समय दीजिए प्लीज। जी, सवाल आपने मुझे पूछा है। आई जस्ट वांट टू मेक 2-3 पॉइंट्स। हु डिसाइड्स ऑन अ मैंडेट? It is the electorate, the voters. The voters of Uttar Pradesh had given a referendum in 2014, 2019. And do believe me when I say, whether it is Muslim women, whether it is the youth, people voted above any caste, creed, community. They voted for deliverables, that is the Honorable Prime Minister, and of course, you had a Chief Minister and Yogi Adityanath. We all know the way UP has been transformed. जब हम सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास की बात करते हैं, तो क्या ये मजहब के आधार पे होता है? Not at all. This is not based on caste, creed, community. Don't forget, it is those Muslim women who got the respect of a triple talaq to be done away with and have been restored with their dignity that have voted for the Bharatiya Janata Party. It is those people who did not have employment and have turned into entrepreneurs in Uttar Pradesh that voted for the Bharatiya Janata Party. It is those people who believe that law and order situation was in the doldrums during the Samajwadi Party and other dispensations that were only corrupt and voted for the Bharatiya Janata Party. You have a chief minister who is trial tested, delivered. You have a prime minister who is a magical name across the length and breadth of this country. And of course, when Yogi Adityanath on this interview with Rahul says that, we will do even better. Even better means better in vote share, means better in terms of a mandate. And do understand, Bharatiya Janata Party ke paas aaj 11 crore sadasya hai. We have 11 crore members that are working in every polling booth, making sure that the realization of the dream of the Honorable Prime Minister, schemes that percolate down to the poorest of poor, doing away with any communal harmony or disharmony, which a lot of people have used as appeasement politics in the past. And when our Sarasang Chalak ji, Mohan ji Bhagwat says, okay, yes, the Muslims must understand they're not here to rule India, but to abide as law-abiding citizens, as is with Hindus, Sikhs, Christians, or any other caste, creed, community. I think it's a very loaded statement, very meaningful statement, and has been applauded by Yogi Adityanath ji as well. Absolutely. Now, in the days to come, it will only be a trial-tested deliver, because politics is no longer about perception. Politics is about performance. You perform or you perish. And the Bharatiya Janata Party is clearly under the leadership of Modi ji and Yogi ji, unmatchable blockbuster victory in 2024. Right. I want to get Kapil Madan's view on this. Kapil, then how do you see this confidence within the BJP camp, primarily in the kingmaker state of Uttar Pradesh? Do you see this as a victory of the Sabka Sath, Sabka Vikas model, the Labhari class that has emerged as a separate vote bank, or do you see this as just better political management than the opposition? Well, I certainly, don't agree with what Mr. Yogi Adityanath had to say. And interestingly, when he was asked a question on the performance of the BJP in 2024, he very subtly gave a rider that in UP the performance would be better, meaning thereby he was not really confident, about BJP's overall performance in the country. But nevertheless, that was his view. But I don't know even on what basis, what was the background, what was the basis on which he concluded that in UP BJP's performance would be better, because if you compare with the election result of 2022, their seats have fallen down. But their vote share went up. Have you got that number? Their vote share went up. That is correct. That is correct. That is correct. Vote share determines the mandate and the referendum, sir. I'll give you the number: 39.67 in 2017 and 41.29 in 2022. And this time it will be even higher. Don't forget, Gujarat, after 27 years, we have a 4% increase in vote share.
Right. But I'm get your sorry, this facts is not the way correct, debate sir. happens. Kapil, please This go is- ahead. this is Shaina, not the Shaina, way please debate happens. let him speak. Now, another thing, Mr. Yogi Adityanath mentioned about crime against women in the UP. There is a report. I can forward the report. You can fact check me on that. UP is highest in crime against the women as per the report that was published in August 2022. And please, I'm happy to be contradicted or corrected by BJP spokesperson here. I challenge her to contradict me on this data. Another thing. Now, in so far as we all saw, what happened in COVID. In fact, the entire country, each one of us suffered during the COVID wave. UP is the worst performing state in terms of the health parameter as per the report issued by NITI Aayog. So I don't know from where, on what But basis Kapil, they make Kapil, these kind get of the tall point claims, I get the point which you're are making. beyond- You're putting which out are these beyond facts. reality. I get the point you're making. But as a political analyst, what I want to understand is that despite all of that happening, how do you explain the growth and the kind of like this phenomenal rise of the BJP in Uttar Pradesh, and they continue to increase that vote share? Piketi Nambiar, how do you explain that? Kapil is pointing out this is wrong, law and order is wrong, COVID management is wrong, the Labhari class is not getting the benefits. All I am saying is I am referring to a data. That's Yeah, it. I know. But let's also be clear that the data also shows that their vote share went up in 2022. That is the data you can't ignore. Piketi Nambiar, please go ahead. Ayushman, sometimes I wonder, the people who hate Modi, Yogi or the Bharatiya Janata Party even sometimes forget the basics. What is that the people of UP keep on electing and re-electing the Bharatiya Janata Party both at the center and the state. And they are saying all what is happening in UP is bad. So who will take the decision? I think we are still a democracy wherein the people take the decision who to govern that particular state. I think the decision has multiple times have been proven and taken by the people of Uttar Pradesh. Now, Kapil Madan was just talking about some facts and figures. And I'm also somebody who has learned economics and as well as history, doing a fairly decent business. I wanted to ask that what is the population of UP? When you compare a UP, where was UP a Bimaru state to today? We are talking about the numbers because of the reason that the UP started doing well. Otherwise, till sometimes ago, just imagine about 7 years back or 8 years back. What was the discussion about all the rape capital of India, a place where only bad thing happens. Today we are talking about investment. In fact, I must tell you, few days ago, I myself has arranged a meeting. Somebody who wanted to put up a plant which is in somewhere in another state wanted to come to UP and put a TV panel, which is the India's largest television manufacturing factory. I think when you talk about the facts should be according to the amount of population. Absolutely. Where was it 7 years back and where is it today? Where is it heading? Is the GSDP of the UP has improved marginally from a small figure in at least almost to double time, 2 times more than the Akhilesh government to right now? Is the unemployment ratio, despite the COVID situation, has come down? Is the UP, the people from UP used to travel all across the country for the employment? Has it reduced? Is the number of airports? Absolutely, in UP yeah. Those numbers are also important. Is the highways in UP has become better? Is number of the amount of industrial clusters which is coming Piketi up? Nambiar, I know the list is long at the end of the day, but we can't forget the fact that at the end of the day, all of us over here, both the political spokespersons and both the analysts, we are in the business of elections at the end of the day. Who can, even if you have conflicting data, who can convince the voter that they are the best bet for their future? You cannot make fool of people today. Absolutely, I completely agree, and I want to take that point to the SP spokesperson, Professor Bhuvan Joshi. अगर एक नंबर हम देखें, 2022 के इलेक्शन में 8% मुसलमानों ने बीजेपी के लिए वोट किया था. ये हाईएस्ट नंबर ऑफ मुस्लिम्स वोटिंग फॉर द बीजेपी है. आप इसको कैसे देखते हैं कि आप मुस्लिम यादव कंबाइन समाजवादी पार्टी का वोट बैंक था, बीजेपी ने ना ही कि बीएसपी का वोट बैंक तोड़ दिया. Many Dalits are now voting
for the BJP. They've broken the hold of the BSP when it comes to the Dalit votes. Your vote base is also now falling prey to the BJP. ये लभारी क्लास का वो जमाना खत्म हो गया। आयुष्मान वो जमाना खत्म हो गया कि यादव और मुस्लिम उनको वोट करेंगे। Absolutely, but my point is, does the Samajwadi Party realize that कि वो जमाना खत्म हो गया? प्रोफेसर भुवन जोशी, क्या वो जमाना खत्म हो गया? आप ये मानते हैं कि लभारी क्लास अभी बीजेपी के पकड़ में है? देखिए, अभी जो उपचुनाव हुआ था जिसमें जनता जनार्दन ने वोट दिया था, किसानों ने, युवाओं ने, विद्यार्थियों ने, मजदूरों ने, मातृशक्ति में, वो दोनों चुनाव हमने बहुत भारी अंतर से जीतने का काम करा। चाहे मैनपुरी का आप लगा लीजिए और खतौली का चुनाव लगा लीजिए। और इनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है भारतीय जनता पार्टी की, वो निश्चित तौर पे लोगों को समझ में आ रही है। लोगों को धर्म के नाम पे धर्म को धर्म से तोड़ना, जाति को जाति से तोड़ना, निश्चित तौर पे इस पे करते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश इसको समझ गया है और इनको आईना दिखाने का काम करा। और मैं एक दो चीजें बताना चाहता हूँ। 22 में हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। एक बात आपको बताना, हमारी सीटें भी बढ़ गई है निश्चित तौर पे। और मैं कहना चाहता हूं 2024 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम मैनपुरी का मॉडल लेके जाएंगे, जो कि मैनपुरी का जो मॉडल है विकास का मॉडल है, मैनपुरी का मॉडल सौहार्द का मॉडल है, गंगा जमुना तहजीब का मॉडल है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत का मॉडल है। इस मॉडल को लेकर 24 में हम लोग जनता की अदालत में जाएंगे माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। जी, आई कंप्लीटली एग्री। आपका वोट शेयर 21.82 से 32.06 हो गया, और अब तब भी बीजेपी को हरा नहीं पाए। बीजेपी का भी वोट शेयर ऊपर चला गया। इनफैक्ट उनका वोट शेयर ऊपर गया क्योंकि वो आपके वोट बैंक को अटैक करके उन्होंने काफी वोट्स ले लिए। शाइना एनसी, प्लीज रिएक्ट टू दैट 2024 you can't ignore the political clout of the Samajwadi Party. That's what Professor Bhuvan Joshi is saying. What will be left of the Samajwadi Party and the BSP is my question. They have only played vote bank politics and appeasement politics. They believe that the Yadavs were theirs, they believe the Dalits were theirs, and the Muslims were theirs. Today, you see, if you look at the analysis of 2014, 2019, not only has the vote share gone up, the referendum for the Prime Minister and the Chief Minister is apparent, but you have Dalits, Muslims voting alike for the Bharatiya Janata Party, which is unheard of. Why? Because as you mentioned, Ayushman, Labharti kya hote hain? Labharti are those people who have got the schemes percolated down to the poorest of poor. When you talk about an Ayushman Bharat, when you talk about a Pradhan Mantri Awas Yojana, a Fasal Bima Yojana, a Jan Dhan banking, Mudra banking, Ujjwala, these have all touched lives of the poorest of poor. And that's why when people vote and you see, even if you talk about Gujarat, look at the case study. After 27 years, there's no anti-incumbency and BJP's vote share goes up by 4%. This will be a case study in the days to come for universities like Harvard, MIT and others, because they cannot just fathom how this good work is translating into people's lives. If you talk about women, women have never been more secure as they have been in Uttar Pradesh. And as Yogi Adityanath ji very rightly said, you know, when he came to Mumbai on a roadshow and people were asking him about law and order, he said, वो लोग जो अन्याय करते थे, वो जेल में है या फिर ऊपर गए हैं. And that is the kind of, comfort level for industry. Why is so much of the industrialist segments, not just infrastructure based, but you talk about insurance, you talk about Bajaj, you talk about any small company wanting to venture into UP because they have that comfort of zero corruption. They have the comfort of a chief minister, Yogi Adityanath, who has really shown the path and said single window clearance and has ensured that law and order is not even in contention as it was with the Gunda Raj of the previous dispensations like the Samajwadi Party. Right. So it's all very well for them to give out their spiel here. But the people of India are way too intelligent, Ayushman. And every time the referendum and the kind of mandate that the Prime Minister gets and the Chief Minister gets is not just shocking. It shows you that they understand if you're going to give stability, you're going to give a charismatic leader, you're going to give development, and you're going to give good infrastructure and good schemes that translate into lives, be it education, health, or security. It is the Bharatiya Janata Party only. And that is the beauty of this democracy.
जो जीता वही सिकंदर, और अब Absolutely. तक सिकंदर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी है. And that's something, besides asking which community got how many candidates, the Samajwadi Party and every other opposition party, every party in general in the business of election should just focus on one thing, victory. And Shaina, as you said, Jo Jeeta, Wahi Sikandar. Thank you so much for joining us on this debate, Shaina NC BJP spokesperson Kapil Madan, PKD Nambiar and Professor Bhuvan Joshi. The twists and turns and the politicking will continue on the road to 2024. But that's all we have to pack it on the show. Thank you for watching.